go live now. Good evening, everyone, and welcome to today's webinar, What's New in Flu, Current Challenges and Management Option. For this webinar, today we have with us our guest speaker, and I would like to take a moment to introduce him. Today, we have with us Dr. Sitesh Roy. Dr. Sitesh Roy is a US board certified allergist, immunologist, and asthma specialist. Dr. Sitesh Roy is the founder of Dr. Roy Health Solution Clinic, Mumbai. He is an ex-associate professor of pediatrics and medicine and director, Jackson Medical Mall Allergy Immunology Clinic, USA from 2002 to 2010. Dr. Sitesh Roy did the fellowship in allergy and immunology at National Jewish Medical and Research Center of University of Colorado School of Medicine, Denver, voted the #1 respiratory hospital in the US for 16 years in a row. In addition to that, Dr. Sitesh Roy did the fellowship is the fellow of the American Academy of Pediatrics, the American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, and the American College of Allergy, Asthma, and Immunology. Dr. Sitesh Roy is a diplomat of American Board of Allergy and Immunology, and he is listed among the best doctors in America from 2005 to 2010. In addition to that, Dr. Sitesh Roy is the author of original articles and publications for leading medical journals internationally, and the first textbook chapter on stress and allergy diseases in the Psychoneuroimmunology textbook 4th edition. Along with that, Dr. Sitesh Roy is a TEDx speaker, allergist, and trusted clinical immunologist, asthma specialist, and holistic healing specialist. With this introduction, I'll request Dr. Sitesh Roy to take over. Over to you, sir. Thank you very much, Manohar, and a very warm welcome to all the attendees to today's webinar. It gives me great pleasure to be with you all today. And the topic that we'll be talking about is influenza. Can we have the next slide, please? So we are talking about what the current challenges are in both the diagnosis and the management of influenza, and where do these stem from? What is unique about this virus? Why is it so relevant? What do we need to know about it? Next slide. So when we look at the current challenges and understanding of flu, influenza and its complications, what are the clinical evidences for Oseltamivir and the guideline recommendations for empiric use of Oseltamivir, all of these things we shall be discussing today. Next slide. So we have all seen news articles where H3N2 has been associated with a spate of high fever and cough cases. This is something that we have seen from the around the country. ये चीज हमने देखा था कि अलग-अलग जगह से ये केसेस अचानक बढ़ने लगे थे जनवरी फरवरी में, और मार्च अप्रैल तक ये केसेस चल रहे हैं, और ICMR ने जो अपने सर्विलेंस नेटवर्क से इन केसेस को आइडेंटिफाई किया था, तो ये H3N2 इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है. कोल्ड वेव, फॉग, राइजिंग पोल्यूशन, ये सब चीजों से और भी केसेस बढ़ते हैं. एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो विजिट्स होते हैं, जो एडमिशंस होते हैं, इसमें भी कोविड एडमिशंस के साथ साथ फ्लू के एडमिशंस, तो ये दोनों वायरसेस को एग्जिस्ट करते हैं और साथ में लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी और इंडिविजुअली भी. नेक्स्ट स्लाइड. फ्लू हमेशा हम सोचते हैं कि एक सीजनल प्रॉब्लम है, कुछ टाइम ऑफ द इयर्स में रहता है और बाकी टाइम नहीं रहता. ऐसा नहीं है. इन्फ्लुएंजा कंसिस्टेंटली हमारे कम्युनिटीज में एंडेमिक वे में रहता है, और इसका टाइम टू टाइम एपिडेमिक फॉर्मेट्स या काफी आप बोल सकते हो आउटब्रेक फॉर्मेट में देखा जाता है. लोगों को प्रोलॉन्ग फ्लू इलनेस होती है, कभी कभी बच्चों को सर्ज इन हाई ग्रेड फीवर होता है बच्चों को. ये शुरुआत होती है और वहां से वो अपने घर लेके आते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, और फिर घर पे अडल्ट्स को होने लगता है, फिर वो अपने वर्क प्लेसेस में जाते हैं, और इसी तरीके से ये कंडीशन पूरे साल लो लेवल में रहता है. और 2 सीजन्स में, मॉनसून्स या मॉनसून के बाद और वापस विंटर या जहां ठंडी पड़ती है, वहां पे ये केसेस काफी बढ़ जाते हैं. फीवर, कॉफ, ब्रेथलेसनेस, निमोनिया, ये सब उसके सिम्टम्स हैं. वीजिंग, थ्रोट इरिटेशन, रनी नोज, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ये सारे पोल्यूशन बढ़ने से और टेम्परेचर के वेरिएशन से, ठंडी गरम, गरम ठंडा, ये सिचुएशंस और फैलते हैं. बच्चों में ये इन्फेक्शंस प्रोलॉन्ग्ड हो सकते हैं, और वायरल इन्फेक्शंस जैसे हमने कुछ महीनों में, लास्ट कुछ महीनों में देखा है,
कई सारे वायरसेस, कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है, आरएसवी है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, एडेनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, बहुत सारे ऐसे को वायरस सर्कुलेशंस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रनी नोज, फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक, वॉमिटिंग, डायरिया, जैसे हम देखते हैं ये फ्लू के क्लासिक सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स कोई भी दूसरे वायरस के कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सीजनल इन्फ्लुएंजा का जो मॉनिटरिंग होता है, सर्विलेंस होता है थ्रू आईसीएमआर के 28 सेंटर्स, उसमें से प्राइमरी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पूना में है। ये सब सेंटर्स के थ्रू तो जनवरी 2 से लेके मार्च 5 इस साल के आप देखोगे इन्फ्लुएंजा ए स्टेडीली था, H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा ए H3N2 जो कॉमन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है, इसके भी बहुत सारे केसेस थे, और इन्फ्लुएंजा बी आप देखोगे ये भी काफी पॉजिटिव था। नेक्स्ट स्लाइड। एज डॉक्टर्स हमारे लिए ये चैलेंज बनता है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं, राइनो वायरस या समझो आरएसवी से या एडेनो वायरस से होता है, उसको डिफरेंशिएट करना फ्रॉम H3N2 जो क्लासिक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है, फ्रॉम कोविड-19 और फिर सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ये सब के बीच कैसे हम नेविगेट करें, कैसे हम मॉनिटर करें, कैसे हम ट्रीट करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम डायनामिक ऑकरेंस देखते हैं इन्फ्लुएंजा का सीजनल वेरिएशन में, चेन्नई से ये स्टडी है, 7 साल का क्यूमुलेटिव स्टडी है, 2019 का किया हुआ, 36,670 स्पेसिमेन, 36,000 से ज्यादा स्पेसिमेंस को स्टडी किया गया 7 साल के ऊपर। और इन्फ्लुएंजा पॉजिटिविटी मॉनसून के स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है और पोस्ट मॉनसून मंथ्स तक, अक्टूबर नवंबर तक ये वेरी मच एक्टिव रहता है। अभी याद रखिए चेन्नई का क्लासिक विंटर नहीं होता, जैसे आप बंबई में भी आओगे तो ठंडी के सीजन में फरवरी जैन फेब में फ्लू के केसेस बढ़ते हैं, नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो नवंबर दिसंबर से ही ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, वहां से फ्लू के केसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका काफी बड़ा सीजन हो सकता है नॉर्दर्न इंडिया में, 5 महीने तक ये सर्कुलेशन में रह सकता है, बाकी टाइम ये लो ग्रेड लेवल में कम्युनिटी में घूमते रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन आप देखोगे 2015 से 2019 तक फ्रॉम 4,200 टू 28,000, 7 गुना बढ़ना। और वहीं पे इन्फ्लुएंजा के डेथ्स जो आप देखोगे 300 से लेके 1218, तो ये ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि इन्फ्लुएंजा के केसेस, और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, कितने तो पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन होके जाता है, उनका टेस्टिंग नहीं होता है, उनका इलाज होता है, कुछ लोग कॉम्प्लिकेशन में हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनका भी टेस्टिंग नहीं होता, कई लोग का डेथ हो जाता है, उनका भी टेस्टिंग नहीं होता। तो ये काफी ग्रोस अंडर एस्टिमेशन आप बोल सकते हो, कुछ जगहों के हैं, कुछ सेंटर्स के हैं, पूरे इंडिया को जोड़ोगे तो बहुत बड़े नंबर्स होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इन्फ्लुएंजा वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। जब भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है मतलब उसके कॉपिंग में बहुत एरर्स हो सकते हैं। कॉपिंग में एरर्स होते हैं मतलब इसका जो एक प्रोसेस होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट, जिससे उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है इन्फ्लुएंजा का, और फिर वो बड़े बड़े आउटब्रेक्स दे सकता है। हाईली कंटेजियस है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट पार्टिकल से ट्रांसमिट होता है, सीजनल एपिडेमिक देता है, अक्यूट फेब्राइल इलनेस देता है, माइल्ड टू सीवियर केसेस होते हैं, और कई बार हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ भी हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे जो दो रिसेप्टर्स है इसके ऊपर, न्यूरामिनिडेज इनिबिटर, न्यूरामिनिडेज रिसेप्टर और हीमोग्लूटिनिन रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर्स बहुत जरूरी है ये वायरस के सर्वाइवल के लिए। साथ में आयन चैनल्स है जो वायरस के एंट्री के लिए बहुत जरूरी है होस्ट सेल में। नेक्स्ट स्लाइड। इन्फ्लुएंजा ए फ्रीक्वेंट एपिडेमिक्स करता है, माइनर एंटीजेनिक वेरिएशन जिसको हम जेनेटिक और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, और पीरियोडिक पैंडेमिक करता है एंटीजेनिक वेरिएशन जो मेजर होता है विद एन एंटीजेनिक शिफ्ट। 2009 में H1N1 जो एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए है जिसको स्वाइन फ्लू बोला गया था, वो लास्ट बड़ा पैंडेमिक था। सबसे बड़ा पैंडेमिक 1918 टू 1920 हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको स्पेनिश फ्लू से जाना गया था। हालांकि वो स्पेन में नहीं ओरिजिनेट हुआ था, वो यूएस में ओरिजिनेट हुआ था, बट वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और उसमें स्पेनिश सोल्जर्स के थ्रू वो यूरोप में आया और वहां से पूरे दुनिया में फैला, और इसने 5 करोड़ लोगों की जानें ली थी, उसमें से 1.7 करोड़ इंडिया में थे।
तो आप समझ सकते हो कि वायरस कितना सस्टेन हुआ है इतने सालों के बाद भी, और कोविड के कंपैरिजन में कितना इसने हलचल और कोलाहल मचाया था 100 साल से ज्यादा पहले। इन्फ्लुएंजा बी ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता है, लोकल एपिडेमिक्स देता है। इन्फ्लुएंजा सी ह्यूमंस एंड स्वाइन दोनों को, मतलब सुअर को भी अफेक्ट कर सकता है। ये माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देता है, और अभी जो करंटली सर्कुलेट हो रहा है या हो रहा था H1N1 स्वाइन फ्लू और H3N2 इन्फ्लुएंजा ए दोनों टाइप के वायरसेस है। नेक्स्ट स्लाइड। फ्लू का ट्रांसमिशन अगर देखें तो ये 6 फुट तक थ्रू कॉफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग लाउडली, सिंगिंग, कोई भी प्रकार का जहां से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स पैदा हो, या ड्रॉपलेट्स नोज माउथ पे जाके कंजंक्टिवा पे जाके लोगों के लंग्स तक पहुंच के इन्फेक्शन दे सकता है, लोकल एंड सिस्टेमिक। जिनको हो जाता है उनको घर पे रहना जरूरी है, उनको लोगों से आइसोलेट होना जरूरी है, क्योंकि वो अपने परिवार में और अपने कम्युनिटी में फैलाएंगे। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। फेस मास्क और हैंड वॉशिंग बिल्कुल हेल्प करता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में। हेल्थी इंडिविजुअल्स बीमार पड़ने के एक दिन पहले से ये वायरस ट्रांसमिट करेंगे अगर उसके बॉडी में आ गया, और अप टू 5 डेज तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, अप टू 7 डेज। एंड चिल्ड्रन तो और भी लॉन्गर देन 7 डेज भी ट्रांसमिट कर सकते हैं ये वायरस को टू अदर पीपल। तो इसका काफी लंबा ट्रांसमिशन फेज है। नेक्स्ट स्लाइड। सिम्टोमेटिक डिफरेंशिएशन अगर देखते हैं बिटवीन ILI, दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, H3N2 क्लासिक इन्फ्लुएंजा ए, सारी सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड कोविड-19, तो हम देखेंगे कि फीवर, मसल एक, कॉफ, लैक ऑफ एनर्जी, सोर थ्रोट सब में होता है। ब्रेथलेसनेस टिपिकल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जैसे राइनो वायरस है, कॉमन कोल्ड फीवर बॉडी एक देगा लेकिन ब्रेथलेसनेस नहीं देगा। राइनो वायरस ने अगर अस्थमा को ट्रिगर कर दिया तो ये ब्रेथलेसनेस दे सकता है, इसीलिए मे और मे नॉट लिखा गया है। राइनो वायरस ने अगर कोविड सीओपीडी के एग्जैसर्बेशन को ट्रिगर कर दिया तो उसमें ब्रेथलेसनेस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, बट कम चांसेस है इन इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल लार्जली कोविड-19 में देखा जाता है, बट अगर किसी को क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है और उस पे अगर उनको H3N2 हो गया तो वो पर्सन का नोज ब्लॉक होके उसका भी सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट जा सकता है। तो हमें माइंड ओपन रखना है इन चीजों के लिए। डायरिया समटाइम्स इन फ्लू, mostly COVID-19, but not seen so much in influenza like illness and severe acute respiratory infection. Headache pretty much सब में हो सकता है, इन्फ्लुएंजा में सबसे प्रोमिनेंट रहता है, कोविड में भी हो सकता है, बाकी सिचुएशंस में भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। फ्लू जनरली लोग समझते हैं कि एक माइल्ड इलनेस करता है, इंसान 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा बहुत बार इवन हेल्थी इंडिविजुअल्स में सीरियस हो सकता है, सिवियर हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इमरजेंसी वार्निंग साइंस इन्फ्लुएंजा के जानना बहुत जरूरी है। बच्चों में फास्ट ब्रीदिंग, ट्रबल ब्रीदिंग, ब्लूइश कलर मतलब साइनोसिस, पानी इनफ ना पीना, डिहाइड्रेशन का रिस्क होना, नहीं जागना नहीं, इंटरैक्ट नहीं करना मतलब वो लेथार्जिक हो जाता है, बहुत सीरियस साइन है। इरिटेबल हो जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है फ्लू। फ्लू लाइक सिम्टम्स इंप्रूव होना और फिर वापस कुछ दिनों के बाद अचानक बुखार, खांसी लेके बढ़ना, ये एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी साइन हो सकता है, विच कैन बिकम सिवियर एंड कॉज निमोनिया। फीवर विथ रैशेस हमेशा वार्निंग साइन हो सकता है सिवियर डिजीज का। अडल्ट्स में डिफिकल्टी ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, छाती में या पेट में प्रेशर या दर्द, चक्कर आना, कंफ्यूजन होना, क्योंकि जैसे मैंने बोला न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस जाने गए हैं फ्लू में। सिवियर एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग, और फिर वापस सिम्टम्स कुछ दिनों में 3-4 दिन में ठीक होना, और फिर अचानक 6-7वें दिन पे बहुत बढ़ के आना बुखार और खांसी। ये बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन या सेकेंड वेव वायरस का भी हो सकता है, तो इमरजेंसी वार्निंग साइन समझ सकते हैं। इन्फेंट्स में नॉट बीइंग एबल टू ईट, हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, खाना न खाना, खाना को रिफ्यूज करना, रोते वक्त आंखों में आंसू ना आना, कम वेट डायपर आना, ये सब डिहाइड्रेशन के साइंस है। तो इन्फ्लुएंजा में बच्चा कम खाएगा पिएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सपोर्टिव केयर, हाइड्रेशन, आईवी फ्लूइड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसा हॉस्पिटलाइज करके। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लिकेशंस अगर देखें, सिंपल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है इन्फ्लुएंजा में, साइनोसाइटिस हो सकता है अक्यूट, उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एंड वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी,
निमोनिया तक जा सकता है, जैसे हमने पहले के स्लाइड में देखा, अप टू 16% लोगों को निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये वॉकिंग निमोनिया टाइप भी हो सकता है और सीवियर कंसोलिडेटेड निमोनिया भी हो सकता है अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। और यहीं से ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंक्लूडिंग साइटोकाइन स्टॉर्म, जैसे हमने कोविड में देखा था, वहां तक प्रॉब्लम जा सकती है और फिर डेथ भी इसका आउटकम हो सकता है। एस्टिमेट किया जाता है कि 2022 में ऑलमोस्ट 5 लाख डेथ्स हुए थे अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा इलनेस के कारण से, नॉट इन्फ्लुएंजा लाइक, इन्फ्लुएंजा के कारण से। तो आज भी इसका डेथ टोल काफी हाई है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हर सीजन में, याद रखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक सीजन होता है, सदर्न में एक सीजन होता है। इसीलिए डायग्नोस कैसे करें इस बीमारी को? तो डायग्नोसिस में सिम्टम्स पहले होते हैं, फीवर, कॉफ, कोल्ड, बॉडी एक, हेडेक, राइनोरिया, फटीग, कभी GI सिम्टम्स। ये हमें सस्पेक्ट करने को मजबूर करते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है, हालांकि दूसरे वायरसेस भी ये कर सकते हैं। और वहीं से लैब कंफर्मेशन जहां पॉसिबल हो, जहां प्रैक्टिकल हो, करना जरूरी है। थ्रोट, नेजल एंड नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन से, ट्रेकियल एस्पिरेट या वॉशिंग से। डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन हो सकता है, वायरस आइसोलेशन और कल्चर हो सकता है, और फिर इन्फ्लुएंजा का RT-PCR भी डिटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो भी हम टेस्ट करें उसका सेंसिटिविटी जानना जरूरी है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसेज, जो एंटीजन डिटेक्शन होता है, वो 47 to 93% एक्यूरेट है। मिस हुआ, टेस्ट नेगेटिव आई, सस्पिशन हाई है, तो वो फ्लू फिर भी हो सकता है। वैसे ही रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर देखते हैं तो इसका सेंसिटिविटी 10 to 70% है, तो ये मिस भी कर सकता है। और RT-PCR 86 to 100% एक्यूरेट होता है। वायरल कल्चर प्रैक्टिकल नहीं है H1N1 में हमेशा होना, लेकिन इन्फ्लुएंजा ए के केसेस में बिल्कुल हो सकता है वायरल आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, और ये डिस्टिंग्विश भी कर सकता है H1N1 फ्रॉम इन्फ्लुएंजा ए। तो जहां पॉसिबल होगा वहां पे हमको RT-PCR चूज करना है। जहां प्रैक्टिकल नहीं है RT-PCR, तो रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट पे रिलाई करना है। अगर सस्पिशन हाई हो और फिर भी अगर टेस्ट नेगेटिव आए, हमको एम्पिरिकली वो इलाज करना है, जैसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा पे। ये क्रक्स है, हमारा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। जनरली लार्जली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, इसमें बेड रेस्ट, फ्लूइड कंजम्पशन, अच्छा वार्म लिक्विड्स देना, कफ सप्रेसेंट अगर जरूरत है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक जैसे पैरासिटामोल, और अगर बॉडी एक वगैरह ज्यादा हो, फीवर ज्यादा हो, तो NSAIDs दूसरे भी दिए जा सकते हैं। मोस्ट पेशेंट्स 3 to 5 डेज में रिकवर करते हैं। हवेवर कुछ केसेस में स्पेशली कोमॉर्बिडिटी हो, प्रीवियस क्रॉनिक डिजीजेस हो बॉडी में, तो बीमारी 7, 10, 15 दिन, 20 दिन भी चल सकता है। मलेज एंड पोस्ट वायरल कॉफ बहुत कॉमन है, जो हफ्तों तक रह सकता है, इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट बहुत बेनिफिशियल होता है। सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन, IV फ्लूइड्स, ऑक्सीजन सपोर्ट, अदर सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं एंटीवायरल ड्रग्स पे। ये ड्रग्स बहुत बेनिफिशियल रहे हैं। एक है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स और दूसरा है एडामेंटेन्स M2 आयन चैनल ब्लॉकर्स। न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स ये क्रिटिकल होते हैं वायरॉन को रिलीज होने से इन्फेक्टेड सेल के, ताकि वो और भी सेल्स को अफेक्ट कर सकते, पैथोजेनिसिटी डिजीज की कंटिन्यू कर सके। इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों में ये ब्लॉक करता है। ओसेल्टामाविर जो हमारा फ्लूवीर है, और ज़ैनामाविर, ये दो ब्रांड, दो ड्रग्स है जो ये कैटेगरी के हैं और बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए एंड बी दोनों में काम करते हैं। एडामेंटेन्स मोस्टली इन्फ्लुएंजा ए पर ही एक्टिव रहता है। ये हाइड्रोजन आयन चैनल से वायरस के एंट्री को रोकता है होस्ट सेल के अंदर, और अमेंटेडिन एंड रिमेंटेडिन दो ड्रग्स है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे एंटीवायरल थेरेपी विद ओसेल्टामाविर कैसे होता है। ओसेल्टामाविर एक सिलेक्टिव इनहिबिटर है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर एंजाइम का। इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों वायरसेस पे ये इफेक्टिव है। प्रोड्रग होता है, कन्वर्ट होता है ओसेल्टामाविर कार्बोक्सिलेट्स में इनटू द लिवर। लिवर से ये पूरे बॉडी में जब सर्कुलेट होता है एक्टिव फॉर्म में, फिर ये एक्सक्रीट होता है किडनीज के थ्रू। इनिबिशन ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, पैथोजेनिसिटी, प्रिवेंटिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये सब करता है ओसेल्टामाविर। और ये इफेक्टिव है सारे इन्फ्लुएंजा ए और बी के स्ट्रेन, हाई पैथोजेनिसिटी, एवियन फ्लू के खिलाफ, स्वाइन फ्लू के खिलाफ, H3N2 ह्यूमन फ्लू के खिलाफ, और फिर लो पैथोजेनिसिटी एवियन फ्लू H9N2 के खिलाफ भी ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट स्लाइड।
मैकेनिज्म अगर देखें ओसेल्टामावीर के काम का, तो न्यूरामिडेनेज इनहिबिटर को जब ये ब्लॉक करता है तब वो रिसेप्टर जहाँ पे बाइंड करके रिलीज करना चाहता है होस्ट सेल से अपने मटेरियल को, ताकि और इन्फेक्शन और सेल्स में स्प्रेड हो, वो हॉल्ट हो जाता है। तो ये चीज हम बहुत क्लियरली देखते हैं कि बेनिफिशियल है फ्रॉम onset of disease to spread within the host and then spread outside to other people also। हर स्टेज में इसका रोल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओसेल्टामावीर फर्स्ट अप्रूव हुआ था यूएस एफडीए से 1999 में, तो 24 साल से ये ड्रग हमारे बीच है, तो वो टेस्टिमेंट होता है उसके सेफ्टी का, इतने साल एक ड्रग का चलना। अप्रूव्ड है मोर देन 100 कंट्रीज में। यूएस एफडीए, सीडीसी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सबने अप्रूव किया है इसके यूज को। नेक्स्ट स्लाइड। डोजेज अगर देखिए अडल्ट्स में जब हम ट्रीट कर रहे हैं फ्लू को, तो 75 मिलीग्राम ट्वाइस डेली कैप्सूल। अगर चिल्ड्रन है तो इसमें सिरप होता है, तो 60 मिलीग्राम पर डे डिवाइडेड ट्वाइस। अगर 15 किलो से कम है, 15 से 23, 90 मिलीग्राम पर डे डिवाइडेड ट्वाइस। 23 टू 40, 120 मिलीग्राम पर डे डिवाइडेड ट्वाइस। और 40 केजीज के ऊपर है तो उसको अडल्ट डोज दिया जाता है। इसमें 150 मिलीग्राम 75 ट्वाइस डेली होता है। इन्फेंट्स अबव 2 वीक्स ऑफ एज भी ये ओसेल्टामावीर अप्रूव्ड है, तो ये भी और एक इंडिकेशन है कि कितना सेफ है ये ड्रग ट्रीटमेंट के लिए। 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम ट्वाइस डेली दिया जाता है। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट एक्सपोज होता है इन्फ्लुएंजा के सेंटिनल एक पेशेंट को, तो ऐसे सिचुएशन में कीमोप्रोफिलैक्सिस दी जा सकती है डिजीज शुरू होने के पहले। जैसे हम मलेरिया में कीमोप्रोफिलैक्सिस देते हैं, वैसे इसमें भी दे सकते हैं। 75 मिलीग्राम कैप्सूल वंस डेली। अगर 15 से कम केजी का बच्चा है, 30 मिलीग्राम वंस डेली। 45, 60 या 75 जैसे आप देखते हैं अबव 40 केजीज हम अडल्ट जैसा ट्रीट करते हैं। कीमोप्रोफिलैक्सिस इन्फेंट्स में रेकमेंडेड नहीं है। पहले 48 आवर्स हेलो।
Sir, you are muted. Yeah. Can you all hear me now? Yeah, sir. Okay. Sorry for that little break. Looks like some network issues here. I don't normally have those, but we were talking about the oseltamivir dosages and we went over these. Can we go to the next slide, please? Oseltamivir is also available in a 30 milligram dose for the younger children, which is dose convenience, less wastage, and better cost effectiveness. So Fluvir really is a brand that has multiple formulations available for all age groups and really provides the convenience for all our patients. Next slide. What are the contraindications of oseltamivir? So it's contraindicated in patients who have a serious hypersensitivity to either oseltamivir itself or any of its active or inactive components in the medicine. If there is a severe allergic reaction to this drug in the past, or there is anaphylaxis, it's contraindicated. Also, if there's a serious drug hypersensitivity, including something like erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, or toxic epidermal necrolysis, then in these conditions, this medication is not recommended to be used. Next slide. When we look at the side effect profile, this is generally well tolerated. Approximately 5 to 10% patients may have some minor symptoms like a stomach upset or nausea or diarrhea or abdominal pain or bronchitis or anything like a headache, which again, remember, these things can occur due to the underlying viral infection also. But there are no serious drug-related events that were reported during the clinical trials. Post-clinical trials, there were some neuropsychiatric effects that were noted mostly in children and in severe disease and certain specific clinical situations. But I think counseling our patients about informing us if they experience any delirium, confusion, anything else, because that can also be, as I said, the neurological manifestations of the influenza itself. We have to be careful. Next slide. What are the benefits of empiric and early use? We look at a walking pneumonia case. 50-year-old male farmer living in Srinagar comes into a tertiary care center, low-grade fever, sore throat, muscle aches, no chest pain, no breathlessness, no vomiting, diarrhea, orthopnea. Referred because he's already had 3 injections of ceftriaxone without improvement. And he's also had levofloxacin for 3 days. And now he's approaching you all for further care. Next slide. He has a slightly fast heart rate because he's also slightly febrile at 100 degrees and his blood pressure is normal. Chest X-ray, chest examination reveals bronchial breathing with coarse bilateral crackles in the inframammary area. His CPK and LDH are elevated, which we know occurred in COVID-19. Also, it can occur in other viral respiratory, lower respiratory infections. Mid-zone interstitial infiltrates are seen on the chest X-ray, and when the nasopharyngeal swab was done for RT-PCR, it showed H1N1 influenza A infection. CRP was mildly elevated, cardiovascular, abdominal, CNS were normal. So this would be a classic case who could be started on oseltamivir. And so let's look at his chest X-ray. Next slide. You see the infiltrates, the fluffy infiltrates. This is interstitial edema that occurs due to the viral infection. Next slide. And he was started on 75 milligram twice daily for 5 days of oseltamivir with supportive care and showed marked improvement in his symptoms, progressive decrease in CPK and LDH, decrease in the infiltrates. You can see in this X-ray also that his infiltrates have reduced by more than 50%. Remember, symptoms recover faster. X-ray takes longer to become normal because edema takes time to go away. Next slide. Oseltamivir treatment in influenza reduces lower respiratory tract complications by up to 55%, hospitalizations by 59%, and antibiotic use for secondary bacterial infection by up to 27%. So more than 3,500 subjects, 10 placebo-controlled double-blind trials. Data is very, very obvious that start this early, use it specifically, and you can make a big difference to the patient, to the treating teams, as well as to the hospital and healthcare system in terms of cost burden. Next slide. Reducing occurrence and severity of pneumonia due to H1N1 by early oseltamivir administration. Retrospective chart review of 442 patients done during the 2009 swine flu pandemic. Patients were started on oseltamivir. Remember, oseltamivir was already around for 10 years, approved for influenza before the 2009 pandemic. So it was used
within the first 5 days on an average, but there were groups that were divided who were started within 48 hours, who were started between day 3 and 7, started between day 8 and 14, and started at a greater than 14-day stage. And let's see what the effects are on the occurrence and the severity of pneumonia in these cases. Next slide. So we find that both the probability and the severity of pneumonia and the probability of severe pneumonia increased as the time from symptom onset to oseltamivir administration. So the longer someone waited to start this drug, the greater the chance that there would be pneumonia and more severe pneumonia. Early initiation led to significant symptom reduction and significant reduction in the occurrence and severity of pneumonia, and shortened the hospitalization timing during the pandemic of 2009. Even when administered beyond 48 hours, oseltamivir showed considerable potential for reducing pneumonia. You can see here, even at day 3, 4, 5, 7, 10, if it was started, it made a difference. Next slide. When we look at patients having a shorter time to oseltamivir administration from the onset of illness, they also got discharged earlier from the hospital. So a great benefit. Next slide. When we look at the combination of oseltamivir with azithromycin, we realize that in hospitalized patients who have both potential infections, the use of these drugs together makes a big difference. Next slide. What we find is that the chance of having secondary bacterial infection goes down by 10 times in the oseltamivir azithromycin group compared to the oseltamivir alone group. Even the risk of these respiratory support being required in the infection goes down almost to half. Next slide. And when we look at the hospital stay down by a day at least, when we look at influenza severity score reduced by at least 2 points. Next slide. So what are the guideline recommendations? The guidelines from WHO say that empiric treatment is strongly recommended. Treatment should be started as soon as possible, as we know all have already seen. Lab confirmation is not necessary to initiate treatment. So during the season, high risk, classic symptoms, risk factors for the patient, start it is what they say, because a negative test does not exclude the diagnosis. In higher risk individuals, presumptive treatment with oseltamivir is totally justified. So comorbid cases with chronic kidney disease, heart disease, liver disease, asthma, COPD, ILD, immunosuppression, immunocompromise, cancer recovery, chemotherapy, radiation, autoimmune diseases on steroids and other immunosuppressants. These are all high-risk groups where use of oseltamivir empirically in the right scenario can make a big difference. Next slide. Can we have the next slide? Yeah. So Ministry of Health and Family Welfare India also says that in empiric antimicrobials to treat all pathogens that are causing severe acute respiratory infection, empiric antibiotic use in community-acquired pneumonia, healthcare-associated pneumonia, and also sepsis. Empiric therapy includes the neuraminidase inhibitors such as oseltamivir for treatment of influenza, where there is local circulation and other risk factors, person has traveled, person has been exposed to animal influenza viruses or any such risk factor, oseltamivir is recommended. Next slide. In adults, this is the American Thoracic Society, which says that in adults with community-acquired pneumonia who test positive for influenza, should the treatment regimen include antiviral therapy? The ATS says it must. And any adult who tests positive for influenza in the inpatient setting, independent of duration of illness before diagnosis, strong recommendation, moderate quality evidence, use oseltamivir. Several observational studies suggest that oseltamivir is associated with reduced risk of death in hospitalized patients with community-acquired pneumonia who have tested positive for influenza. Treatment within 2 days is ideal, but even up to 4 to 5 days after onset of symptoms, and I've had clearly my chest physician colleagues tell me that even on day 9 or 10, a patient getting admitted to the ICU or to the hospital in oxygen requirement and other conditions with whatever comorbidities, if the influenza comes positive, oseltamivir started even at that stage makes a difference, and we saw it earlier also. Next slide.
So in summary, proper diagnosis and treatment can prevent flu complications. Empiric use of oseltamivir reduces lower respiratory tract complications, hospitalization, and antibiotic use. WHO, ATS, and the Ministry of Health and Family Welfare India all recommend empiric use of oseltamivir. Start oseltamivir therapy in confirmed or suspected flu cases depending on clinical scenario. Be prompt in using it, sooner the better the results. And I certainly think that this can make a big difference. Last slide. I want to thank all of you all for your attention. I do put a lot of information related to allergy, asthma, respiratory diseases on my Instagram, LinkedIn, and YouTube channel. You're welcome to follow us on these links. And if there's any other way that we can guide you or support you, please feel free. I shall now take a couple of questions that may have come in. So Manohar, can we have the questions, please? Sir, I shared with you. Okay, I'll just open the chat. So for some reason, Manohar, today in the chat box, it is not showing because can you read out the questions? Yeah. Because I think Sign this and time, symptoms of viral diagnosis. can you, Sign and symptoms for the viral diagnosis. we have already discussed this during the lecture. So fever, cough, cold, body ache, headache, viruses, remember, affect multiple systems. Bacteria affect a single system, whether it's the sinus or the lungs, or whatever it might be. So if you have multi-system involvement, you can assume it's a virus because that's how they behave. Sore throat with a runny nose, headache, you can assume it's viral. You get a sore throat with cough, body ache, fever, you can assume it's a viral. So I think it's the spectrum of symptoms that makes a big difference in identifying what the cause is, and certainly helps in that way. Next question. Clinical test marker to differentiate bacterial and viral infection. So when you suspect a bacterial infection, really, for example, if it's a lower respiratory tract infection, a sputum culture is the way to go, because an elevated white blood cell count and elevated CRP may be seen in both viral and bacterial. The purulent color of the discharge may also be present in viral and bacterial. So really you need RT-PCR for the viral sputum culture or a nasopharyngeal swab or whatever else that might be to help differentiate these infections. Also, a high-grade fever may sometimes point towards a bacterial infection, but again, it's not a perfect thing because you can get a high-grade fever even in a viral infection. So I think that the lab markers like a high white blood cell count, neutrophil change. Now, in a viral, you would expect a lymphocytic prominence, but you can see a neutrophilic prominence sometimes. We saw in COVID-19 that the neutrophil lymphocyte ratio was very helpful. So depending on the scenario, you would have to use these different tests. Chest x-rays, if you see more of a fluffy infiltrate, you're thinking viral. If you're thinking more of a consolidation and segmental consolidation, you're thinking more bacterial. But again, not a perfect thing. It can vary from patient to patient. So I think lab parameters combined with clinical acumen, combined with the current circulation of viruses and bacteria in the community can all help differentiate these. Next question. Who need chemoprophylaxis? As I mentioned, it is always the high-risk individuals, people with chronic heart disease, diabetes, hypertension, lung diseases, autoimmune diseases, immunosuppressed patients, immunocompromised patients, immunodeficient patients. All of these patients definitely, if they are exposed to a sentinel case or a case of influenza, would benefit from chemoprophylaxis. Obviously, it can be also be done within families. If one member gets it, there are other high-risk cases in the family. People who've had a recent transplant, for example, chemoprophylaxis becomes important for more than one family member in such situations. So I think it is all dependent. We do have to remember that in renal patients whose creatinine clearance is reduced, the dose of oseltamivir has to be adjusted if it is below 60, the creatinine clearance. And that you can see in the product monograph and review that in such cases if you have to use it. Next question. So these are the questions. Okay, great. Yeah. So I appreciate all of you all being here on this evening on a Friday, and we did have a little glitch with the
network, but we were able to complete on time, take all the questions. And I hope that all of the doctors who are listening now or later do take care of yourselves. Because if you are safe, your patients are safe. If you are safe, your families are safe. So masking, hand washing, sanitizing is still very important in this day and age. We know that Omicron XBB 1.5 and 1.16 are clearly causing a lot of infections, and many people are getting co-infected with influenza and COVID-19. And if we do the testing, differentiate them, start the Oseltamivir early, we can definitely help the influenza part or the ones who have that infection. So do take care, and wish you the very best. And thanks to Manohar and Hetero Healthcare for this seminar in a timely manner. It's a much needed topic, and I wish you all the best, and Jai Hind. Thank you very much, sir, for sharing your valuable clinical experience and taking this presentation in such a manner, in a simple manner, so that all the attendees must be getting benefit and their day-to-day clinical practice in fighting the flu as well as all types of the viral infection. Thank you, sir, for sharing your valuable experience and sharing your valuable time. And I thank all the attendees for sticking to till the end of this webinar, which is there. That is the what's new in flu, current challenges and management option. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Have a good evening. Thank you. Good evening.